हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। बिग बैश लीग 2020 का मैच नंबर 42 खेला जाएगा बिटवीन मेलबर्न स्टार्स एंड मेलबर्न रेनेगेड्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इस वक्त मेलबर्न स्टार्स हैव बीन परफॉर्मिंग डिसेंटली एंड दे वुड लुक फॉरवर्ड टू विन दिस गेम सो दैट दे कैन स्टे इन द कॉम्पिटिशन टू क्वालिफाई। ऑन द अदर हैंड मेलबर्न रेनेगेड्स का अब तक बहुत ही बुरा सीजन गया है, अ सीजन दैट दे वुड लाइक टू फॉरगेट एंड ऑल दे आर प्लेइंग फॉर इज नाउ रिस्पेक्ट। लेकर आ गया हूं मैं आप सबके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्रिकेट बेटिंग वीडियो जिसको देखकर होपफुली यू एंड मी विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। टिप नंबर 1, द मैच विनर। Looking at the current scenario, I will put my money and recommend you to bet on Melbourne Stars. अगर आप head to head देखें between Melbourne Stars and Melbourne Renegades, out of the 18 games that both the teams have placed against each other, 13 games जीते हैं Melbourne Stars ने और सिर्फ 5 जीते हैं Renegades ने। Melbourne Stars इस वेन्यू में 6/3 से अहेड हैं। 9 खेले गए गेम्स में से वो 6 गेम जीत चुके हैं। सो इन दिस वेन्यू एज वेल दे हैव एन अपर हैंड। ऑल्सो मेलबर्न रेनेगेड्स हैज बीन इन अ वेरी वेरी पुअर फॉर्म। 10 में खेले गए गेम्स में से 8 गेम वो हारे हैं और सिर्फ 2 गेम जीते हैं। इनफैक्ट इन द लास्ट 5 गेम्स सिर्फ एक ही गेम वो जीत पाए हैं। So it's going to be very, very challenging and difficult for a very demotivated Melbourne Renegades to come out of their form and go and beat a very well star-performed team like Melbourne Stars. इसलिए अगर आपको लगाना है पैसा on match winner, put your money on Melbourne Stars. They have a very, very good chance of winning this game. Tip number 2, the first 6 overs. Renegades ने जब भी करी है पहले बैटिंग, they have done a pretty good job in the first 6 overs. 34, 47, 46, 56, 43, 46, 52, 43 have been their score. So they have been always above 40 except on the very first occasion. Put your money over 37 runs for Melbourne Renegades जब भी वो बैटिंग करते हैं for the first 6 overs. मेलबर्न स्टार्स भी अपने फर्स्ट 6 ओवर्स में काफ़ी रन देते हैं। ऑन एन एवरेज दे गिव समवेयर अराउंड 40 एवरी सिंगल टाइम। सो पुट योर मनी ऑन दिस, इट इज़ अ लो रिस्क बेट, विल गिव यू गुड रिटर्न्स। टिप नंबर 3, द 20th ओवर स्कोर। 20 ओवर में कितना स्कोर बनाएगी? And remember, this is only when the team is batting first, because while they are batting second, while they are chasing, उस समय गेम के अकॉर्डिंगली वो खेलते हैं, कितना उनको टारगेट होता है। So this bet is only valid for the very first inning. Melbourne Stars have always scored 3, 10, 18, 14, which means 20th over में they do score a lot of runs. On the other hand, Renegades ने 3 बार जब पहले करी थी बॉलिंग, 2 out of 3 times they have given more than 10 runs in the 20th over itself. So yes, it is a medium risk, but keep an eye on कौन बैटिंग कर रहा है in the 20th over, and if they have anybody who is set, who can hit 4s and 6s, put your money on 10 plus runs and you will make good money and a good return as well. Tip number 4, the first inning score. Now Melbourne Renegades ने जब भी करी है बैटिंग in the first inning, उन्होंने स्कोर किया है 157, 168, 166 and 149. So they haven't really went all above and beyond and scored 180 or 190. They just couldn't manage. On an average, Melbourne Stars जब भी करते हैं bowling, they give somewhere around 156. Because ये मेलबर्न में खेला जा रहा है दूसरा गेम ऑफ दिस सीजन, आई हैव टेकन द डेटा फ्रॉम बिग बैश लीग 2019 एंड मेलबर्न का एवरेज रहा है 158. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड. Therefore 179 runs and below is a safe bet. तो अगर करती है मेलबर्न रेनेगेड्स बैटिंग, feel free to put your money on 175 and under and you will get good return for it. Tip number 5, the most match sixes. As I always say, Melbourne Stars have a fantastic set of super 6 hitters like Marcus Stoinis, Nicholas Pooran and Glenn Maxwell. If they all 3 play and if they all 3 click, there is nobody in the Big Bash League जो उस टीम को हरा सकता है when it comes to sixes. On the other hand, Melbourne Renegades are right now the last team
उनका हर तरीके से परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है. Sixes are no exception. So put your money on this. This is my tip of the day. You will make good money, good return with a low risk bet. Last tip number 6, the second inning chase. जब भी करी है मेलबर्न रेनेगेड्स ने चेज, दे हैव लॉस्ट 4 out of 6 गेम्स. सिर्फ 2 बार वो जीत पाए हैं. Every time they had to chase anything above 100, 152, 146, 114 and 103, they have lost. They have not been a good chaser. They only managed to win twice when they were chasing 45 and 91, or 91 against Adelaide Strikers was also a good luck. So अगर Melbourne Renegades को करना पड़ा chase, and if they're chasing somewhere around 100 plus runs, put your money on Melbourne Stars to win the game and you will get a good return out of it. तो ये थी मेरी 6 क्रिकेट बेटिंग टिप्स फॉर द मैच नंबर 42 बिटवीन मेलबर्न स्टार्स एंड मेलबर्न रेनेगेड्स एट द मेलबर्न ग्राउंड. आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी, यूजफुल लगी. इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड द कम्युनिटी, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोज़ लेके आता रहूँगा मैं एवरी सिंगल डे. Until then, I wish you all the very best. Khuda Hafiz. Sayonara.